Welcome, dear students. This is our second lecture on the special theory of relativity. And in today's lecture, we shall study what is length contraction. Length contraction को समझने के लिए first we have to define or know a concept of proper length. Proper length क्या है? Supposing we have got a rod और इस रॉड की लेंथ दो ऑब्जर्वर्स मेजर करते हैं. सो वी हैव गॉट ऑब्जर्वर O and we have got observer O prime. So let us assume that the rod is moving with some velocity v along this direction. So हम ऐसा कर सकते हैं that we will attach observer O prime with the rod. So it is attached with the rod. So for observer O prime, the rod is at rest. Rod is at rest. तो जो observer O prime इस रॉड की लेंथ मेजर करेगा उसे हम कहते हैं प्रॉपर लेंथ, एंड वी डिनोट दैट प्रॉपर लेंथ विद L0. फॉर ऑब्जर्वर O द रॉड इज ऑब्वियसली मूविंग. तो जो ऑब्जर्वर इस रॉड की लेंथ मेजर करेगा उसे हम डिनोट करेंगे विद L. सो द ऑब्जर्वर O measures length of the rod to be L, and it has been observed that L and L0, they are not equal. In fact, L is less than L0. For an observer for whom an object is moving, its length appears to be shortened, and this process is called length contraction, and this length gets contracted along the direction of motion. अच्छा, एक चीज तो ये हुई, इसकी रेसिप्रोसिटी देखें. In the second case, imagine the rod is at rest and the observer O prime is at rest. So both rod is at rest, observer O prime is at rest. So in this case also, जो observer O prime rod की length measure करेगा, that will be again the proper length. क्योंकि शर्त ये है कि जो proper length होने के लिए observer के लिए the object must be at rest. And in this case, let us assume that the observer O is moving with velocity v in this direction along the length of the rod. So in this case, the rod will be in motion for observer, या हम कहेंगे observer will be in motion with respect to rod. दोनों cases equivalent हैं. So far as inertial frames are concerned, दो में से एक मोशन में होना चाहिए. अगेन जो मूविंग ऑब्जर्वर है, जो इस स्टेशनरी रॉड की लेंथ मेजर करेगा, दैट विल बी L, एंड दैट विल बी अगेन लेस देन इट्स एक्चुअल लेंथ और इट्स प्रॉपर लेंथ. दिस इज द लेंथ कंट्रैक्शन. सो ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में हो या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो और ऑब्जर्वर मोशन में हो, इन ईदर केस ऑब्जर्वर विल मेजर a small length as compared to the actual length of the object, and this phenomenon is called length contraction. And the contraction happens by a factor of under root 1 minus v square by c square. If
the motion of the object is v, if velocity of the object is v, or velocity of the observer with respect to object is v. In either case, this is the contraction factor. And L equals L naught अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. अब देखें इस अंडर रूट टर्म में 1 को कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट ही होता है, सो दिस अंडर रूट टर्म विल बी लेस देन 1. तो ऑब्वियसली L will be less than L naught. और जितनी वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, चाहे वो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या वो वेलोसिटी ऑब्जर्वर की हो विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, जितना इस वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा उतना इस यूनिटी से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उतना इसका वैल्यू लेस देन 1 मिलेगा, तो उतनी लेंथ भी शॉर्टन हो जाएगी. सो मोर द स्पीड मोर द कॉन्ट्रैक्शन. अलबत्ता यहां पे ये पॉइंट याद रखने लायक है कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ ओकर्स ओनली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दे विल रिमेन unaffected. Let us derive expression for this length contraction. We have a rod AB जिसके एंड पॉइंट्स हैं A और B, और हमारे पास दो फ्रेम्स हैं. One is frame S, it is stationary, and another is frame S prime. तो रॉड AB के जो एंड पॉइंट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे इन बोथ फ्रेम्स. Since the rod lies along x axis, so we will not need those y and z coordinates. So we will not need those y and z coordinates. So we will talk only about the x coordinates. Let us suppose the rod AB is moving along x-axis with velocity v, positive x-axis with the velocity v. At any time, इसके जो end pointers हैं A, तो उसके अगर हम coordinates देखें, in frame we will get it as x coordinate x1, and in frame S prime we will get the coordinate of A as x1 prime. सिमिलरली जो इस रॉड का दूसरा एंड है एंड बी, अगर हम उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखें इन फ्रेम एस वी गेट x2, और अगर हम एस प्राइम फ्रेम में देखें इसका एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज x2 प्राइम. सो दीज आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू एंड पॉइंट्स इन द बोथ फ्रेम्स. सो व्हाट वी विल डू, वी विल अटैच फ्रेम एस प्राइम along with the rod. So rod की velocity v है, तो frame की भी velocity यही v है. Both are moving in the same direction with the same velocity. So as far as frame S prime is concerned, rod AB is at rest because हमने इस फ्रेम को रॉड के साथ ही अटैच कर दिया है. सो एस प्राइम जो लेंथ मेजर करेगा रॉड ए बी की, दैट विल बी इट्स प्रॉपर लेंथ एल नॉट. अलबत्ता जो हमारा स्टेशनरी फ्रेम है उसके लिए रॉड मोशन में है, it is moving with the velocity v. So stationary frame जो इस रॉड की लेंथ मेजर करेगा that will be L, और हमें इस L और L नॉट के दरमियान रिलेशन डिराइव करनी है. Now obviously length measured by frame S will be the difference in x positions of its endpoints, so it will be x2 minus x1. Similarly, जो फ्रेम S प्राइम है जो लेंथ मेजर करेगा रॉड AB की, this will be given by the difference of
its x positions of its end points. लेकिन फ्रेम s प्राइम में पॉइंट b का x पोजिशन है x2 प्राइम माइनस पॉइंट a की जो x पोजिशन है दैट इज x1 प्राइम. So frame S measures length equal to x2 minus x1 and frame S prime measures length of rod to be equal to x2 prime minus x1 prime. तो फ्रेम S prime जो लेंथ मेजर करता है x2 prime minus x1 prime, this will be its proper length. Why proper length? Because the rod AB is at rest with respect to frame S prime. इसी तरह length measured as per frame S, that will be x2 minus x1. तो यहां पे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे. x1 prime and x1 will be related by this relation. इसमें 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर उसको हम गामा के बराबर रखते हैं. सो वी विल गेट x1 प्राइम इक्वल टू गामा टाइम्स x1 माइनस वीटी. दैट विल बी आवर इक्वेशन नंबर 3. इसी तरह हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे बिटवीन x2 प्राइम एंड x2. सो दिस इज हाउ x2 प्राइम एंड x2 आर रिलेटेड as per Lorentz transformation. इसमें भी हम 1 by under root 1 minus v square by c square, we will put that equal to gamma. So we will get x2 prime equal to gamma x2 minus vt. This will be our equation number 4. Let us subtract equation 3rd from equation 4. So we will subtract equation 3rd from 4th. So इक्वेशन 4th के लेफ्ट हैंड साइड में है x2 प्राइम, देन हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो माइनस, और इक्वेशन 3rd के लेफ्ट हैंड साइड में है x1 प्राइम इक्वल्स इक्वेशन 4 के राइट हैंड साइड में है गामा टाइम्स x2 माइनस vt. सो दैट इज हियर. फिर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो माइनस इक्वेशन 3rd के राइट हैंड साइड में है गामा x1 माइनस vt. सो दैट इज हियर. So this is what we get. तो इसको हम थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे. We will get x2 prime minus x1 prime equals, हम ये ब्रैकेट्स हटा देंगे तो we will get gamma times x2 minus gamma times vt. यहाँ पे माइनस गामा से मल्टीप्लाई करना है. We will get minus gamma times x1, then माइनस गामा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस will become plus. So gamma into vt. तो राइट हैंड साइड में ये माइनस गामा vt प्लस गामा vt कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में हम गामा कॉमन आउट कर सकते हैं. तो पहली टर्म में बचेगा x2 और दूसरी टर्म में बचेगा x1. तो दिस इज व्हाट वी गेट आफ्टर सिंपलीफिकेशन. अच्छा, what is x2 prime minus x1 prime? This is length of the rod measured as per frame S prime. That is, this is the proper length L0. इसी तरह what is x2 minus x1? This is length of the rod measured as per frame S and that is L. So we get L नॉट लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स गामा टाइम्स L, या गामा को हम यहां पे ले जाएंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा. तो वी गेट L इक्वल्स 1 by gamma times L नॉट. नाउ गामा इक्वल्स 1 by अंडर रूट 1 minus v स्क्वायर by c स्क्वायर. तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वी विल गेट 1 बाई गामा इक्वल्स, इसका रेसिप्रोकल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. वो हम यहां यूज करेंगे तो वी विल गेट L इक्वल्स, एक तो राइट हैंड साइड पे L नॉट है विच इज हियर,
और 1 by gamma हमें मिला है अंडर रूट 1 minus v square by c square. So equation 5 gives us expression for the length contraction, and this under root term will be always less than 1. So that means L will be always less than L naught. So for an observer जिसके लिए एक object motion में हो, that will always measure a length that will be smaller than the actual length of the object. So a moving rod appears to be contracted along the direction of motion. और इसमें एक और चीज देखेंगे कि जितनी हम वेलोसिटी का जो इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो जो ये अंडर रूट टर्म है उसका वैल्यू उतना डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू 1. तो अपेरेंट लेंथ का वैल्यू भी उतना डिक्रीज होगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल लेंथ. सो जितनी ज्यादा स्पीड होगी, मोर द स्पीड, मोर द कंट्रैक्शन. Now let us consider two special cases. One, when the object will be moving at ordinary speeds, very small as compared to vacuum speed of light. And second case, when the object will be moving at speeds tending to the vacuum speed of light. So first consider the case when the object has got ordinary speed. This is ordinary speed because the speed of object is very small as compared to the speed of light, and hence we can neglect it as compared to vacuum speed of light. जरा देखें कि ये जो हमारी अंडर रूट टर्म है ये क्या मिलेगी, इसमें v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर है, तो we can neglect this v as compared to c. We can put v equal to 0. तो ये जो माइनस टर्म है ये सारी की सारी 0 बनेगी. सो वी विल गेट ओनली अंडर रूट 1 एंड दैट इक्वल्स 1. सो हमारी लेंथ कंट्रैक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन है L इज इक्वल टू L नॉट इंटू अंडर रूट टर्म, दिस अंडर रूट टर्म इज very much equal to 1. So we get L is equal to L naught. So the apparent length equals the actual length. So when an object travels at ordinary speeds, length contraction is not observable. Now let us consider the second case when the object is traveling at very high speeds tending to speed of light, or rather very much equal to the vacuum speed of light. तो जरा देखें, in that case हमारी जो अंडर रूट टर्म है ये क्या मिलेगी, इसमें हमें we have to put v exactly equal to c. So we will get 1 minus v square की जगह c square आएगा, and c square by c square is 1. So we will get under root 1 minus 1, we will get 0. So हमारी जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्सप्रेशन थी, इसमें अंडर रूट टर्म एग्जैक्टली 0 मिलती है. So L will be equal to 0. So when an object travels at the vacuum speed of light, हमें इसकी लेंथ दिखेगी ही नहीं. If an object travels at the vacuum speed of light, we cannot see it because its length will become 0 for a stationary frame. Let us do a conceptual problem. How will a circle appear in a moving frame? या सर्कल ही मूव कर रहा है और हमारा ऑब्जर्वर एक स्टेशनरी फ्रेम में है, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी पोज कर सकते हैं, हाउ विल a moving circle, how will a moving circle appear to a stationary observer? Because it doesn't matter कि ऑब्जेक्ट मोशन में हो और ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, या ऑब्जेक्ट ही रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर मोशन में हो. तो when the velocity is 0,
तो जैसा कि हमने अभी पहला केस देखा कि लेंथ में कोई कॉन्ट्रैक्शन हमें नहीं दिखेगी, तो हमें सर्कल बिल्कुल सर्कल ही दिखेगा। एंड वी विल नाउ सपोज द circle will start moving in this direction, in the horizontal direction. अब अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो ये डायमेंशन है वर्टिकल डायमेंशन, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। देयर विल बी नो चेंज along the vertical dimension. हाँ, जो इसका horizontal dimension है that is along the direction of motion, because this is the direction of motion. तो ये डायमेंशन जो है this will get contracted. तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो डिक्रीज होगा एंड we will find it to appear like an ellipse. तो इसका जो वर्टिकल डायमीटर है उसमें कोई चेंज नहीं आई, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है वो कंट्रैक्ट हो गया। This is when we increase its velocity greater than 0. अगर हम इसकी वेलोसिटी, हमने इस एग्जांपल में 0.866 टाइम्स वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट रखी है, अगर हम वेलोसिटी को और इंक्रीज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन और ज्यादा होगी, सो हॉरिजॉन्टल डायमीटर और डिक्रीज होगा। and when v will tend to c or exactly will become equal to c, तो जो ये horizontal length है this will become 0, and then the circle will appear just like a straight line. So a moving sphere appears to be a circle appears to be ellipse, and a moving sphere appears to be ellipsoid, and it will be contracting in length along the direction of motion. और जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा contraction भी होगी। Then another problem, how will a square appear in a moving frame? तो make a square, इसके 4 साइड्स होते हैं और चारों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है। एंड सपोजिंग दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आई विल गिव यू कि आप खुद इसको विजुअलाइज करें कि हाउ विल अ मूविंग स्क्वायर अपीयर for a stationary frame, or how will a stationary square appear for a moving frame. तो obviously जो इसके vertical dimensions हैं they will not change, they will remain constant. अलबत्ता the dimension along the direction of motion will get contracted, तो obviously it will become a rectangle. So I leave the problem up to you. Let us do a problem on length contraction. A particle is traveling through the Earth's atmosphere at a speed of 0.5 c. So the speed of the object is given 0.75 c. तो इसको हम 3/4 times c b लिख सकते हैं. And to an earthbound observer, the distance it travels is 2.5 kilometer. Now we have to see whether it is L or it is L naught. A particle is moving and the observer is earthbound. So observer is stationary, particle is moving. So this length is L, 2.50 kilometer. How far does the particle travel in the particle's frame of reference? अगर हम particle के साथ ही एक frame of reference attach कर दें तो वो जो ये length measure करेगा that will be proper length, तो वो determine करनी है। V दिया गया है 3/4 times c. Length in the moving frame दिया गया है, तो length in stationary frame, तो obviously we will use the expression for length contraction, L equals L naught under root 1 minus v square by c square. तो हमें L naught चाहिए, so हम L naught को अपनी जगह पे रखेंगे और ये जो अंडर रूट टर्म है इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, it will go in the denominator for L, so we will get L divided by under root 1 minus v square by c square.
Now you know L, you know V in terms of C, so you can easily solve it, and I leave it